बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। धम्मा वेव्स फेसबुक लाइव पेज पर आप सभी का स्वागत है, सभी को अभिनंदन है, सभी को नमो बुद्धा, जय भीम, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। ये मैं इसलिए तीनों आपको विश कर रहा हूँ क्योंकि हमारा जो फेसबुक धम्मा वेव का चैनल है ये दुनिया के तकरीबन बहुत सारे मुल्कों में लाइव देखा जा रहा है। चाहे हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें, चाहे यूरोप की करें, चाहे एशिया की करें, चाहे मिडिल ईस्ट की करें। तो जैसे नॉर्थ अमेरिका में अभी सुबह है, हमारे साथी वैंकूवर से और टोरंटो से हमारे साथ जुड़े हैं, उनके लिए गुड मॉर्निंग है। यहाँ यूके में गुड आफ्टरनून है, सभी को गुड आफ्टरनून। और इंडिया के हिसाब से अभी 8 बज चुके हैं, तो वहाँ सभी को गुड इवनिंग। इसलिए हमने तीनों को अभिनंदन किया है। हमारा प्रोग्राम इनवाइट करते हैं और सभी का हम स्वागत करते हैं। साथियों, आज के प्रोग्राम में जो हम इस तरह है, जो एवरी संडे की तरह हम बहुत ही हम लर्नर बनते जी को इनवाइट करते हैं, वो अपने धम्म देशना देते हैं। और एक साथ हम एक ले पर्सन उपासक या उपासिका को भी एवरी संडे हम रिक्वेस्ट करते हैं वो धम्मा वेव के पेज पर आकर वो अपने जो एक्सपीरियंस है बाबा साहब के मिशन के बारे में, धम्मा के बारे में वो बताएं। तो आज के जो पूज्य भंते जी धम्म प्रवचन करेंगे, वो भदंत अजान सुजान जी हैं। और जो उपासिका ले पर्सन उपासिका एज ए हमारे गेस्ट स्पीकर हैं, वो मिस चंदेल, सरिता चंदेल यूके से है। हम उन सभी का, दोनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और सभी देखने वालों का, फेसबुक देखने वालों का हम अभिनंदन करते हैं। सबसे पहले मैं पूज्य बनते अजान सुजान जी से के बारे में कुछ उनकी इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। पूज्य बनते जी फाउंडर और चीफ अबाउट ऑफ वारा पुण्य मेडिटेशन सेंटर एबरडीन स्कॉटलैंड के वो चीफ अबाउट हैं और मेडिटेशन सेंटर के फाउंडर हैं। बनते जी बेसिकली नेपाल से हैं। उन्होंने 1997 में नोविस, जो श्रामनेर एट द एज ऑफ 18 वो नोविस बने। और 1999 में हाई ऑर्डिनेशन बनते जी ने थाईलैंड से प्राप्त की। उनकी स्टडी थाईलैंड से उन्होंने हाई ऑर्डिनेशन किया। उनका जो स्टडी है, जो डिग्रीज है, जो क्वालिफिकेशन है, बनते जी ने 2003 में अपने ग्रेजुएशन थाईलैंड से किया, ग्रेजुएशन इन रिलीजियस स्टडी। उसके बाद बनते जी ने 2006 में मास्टर डिग्री किया, एमए इन बुद्धिस्ट स्टडीज। उसके बाद यही बात कम नहीं फिनिश नहीं हुई। जब वो इंग्लैंड में आए, यूके में आए, तो स्कॉटलैंड में आए, तो वहाँ 2015 में बनते जी ने एमएससी की डिग्री किया, एमएससी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एबरडीन ऑन रिलीजन एंड सोसाइटी। इस पर उन्होंने एमएससी किया। और इसके अलावा बनते जी को वहाँ एबरडीन में ऑनररी, ही इज द ऑनररी चैपलन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ एबरडीन, and he is got the honorary excellent Dhamma Doot work award at the year 2019 in Thailand. He is excellent ambassador of Dhamma award, उनको थाईलैंड से 2019 में मिला। इनके अलावा बंती जी ने बहुत सारी बुक्स पब्लिकेशन की है। वो नेपालीज में है, वो थाई लैंग्वेज में है और वो इंग्लिश में है। मोर देन 15 बुक्स द बनते जी हैज रिटन about Buddhism, society and religion. Now I would humbly request Pujya Bante Ajahn Sujan ji, please give us a short chanting. वो थोड़ी short chanting करेंगे, उसके बाद वो धम्म देशना करेंगे। Now Pujya Bante ji, over to you. Thank you. Bante ji, please unmute yourself.
Ya Sambuddhon Sawakhato Yena Bhagavata Dhammon Subandevano Yasa Bhagavato Savaka Sankhon Imina Sakarena Tang Buddhang Abhipuchayami Imina Sakarena Tang Dhammang Abhipuchayami Tang Sanghang Abhipuchayami Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Saṅghāṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dutiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dutiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dutiyampi Saṅghāṃ saraṇaṃ gacchāmi, Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Tatiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Tatiyampi Saṅghāṃ saraṇaṃ gacchāmi. So, good afternoon, everyone. First of all, I would like to thank you, Dhamma Wave team, for inviting me to give this special Dhamma talk. And the Dhamma Wave team has got Ananda Bali, Harbans Birdi, Manohar Lal, Kusminder, and so on. And also I was told that a special guest, Sarita Chandel, will be giving a short reflection after the talk. So Dhamma Wave, actually I was invited about roughly 9 months ago to give a talk. And I was very excited to be part of it. And Manohar just even announced that this month, Dhamma Wave is going to celebrate the first anniversary. So congratulations that you have continued the service, giving an opportunity to reach the Dhamma and also understand the Dhamma. So many people around the world are watching, and you have achieved a great honor and great work you have been doing. So today in particular, I was invited again to give a talk. So with that, I was reflecting that the Buddha spent 45 years, roughly 45 years current India, until his age of 80 and passed away.
The whole Buddhism was started the very day after he gave the first discourse to the 5 ascetics in Varanasi. And this is also known as Dhamma Chakka Day, the day when the Buddha gave the first discourse and also the foundation of Buddhism. And in this discourse, a Buddha didn't just simply told what he found, but he gave what were during that time and what had been practiced. So first, he gave 2 extremes that people been practicing. And here are the 2 extremes that people were practicing in those days. And that is the Kama Sukhallikana Yoga, or the sensual pleasure, or in a modern term, it is known as materialistic. And the second is Attakila Yoga. This is a translation, is known as a self-torture or a mortification. Now here, we have to look at the human needs to understand this fundamental views that people are having, are having, and definitely will have it. So human needs, the first need is a basic need that needs to be fulfilled. And the second, a social need or social security. And the third, the spiritual needs, are looking for these 3 needs to be fulfilled so that they can attain the success in their life. And on the basis of that, there were so many conflicts. And there are and will be, and also trying to develop their own identities, their status, and who is senior than others, and so on. Now, this is again, when you look at the positive psychologists, his name is Maslow's need, hierarchy need, we see that all human beings are always looking for the basic needs to begin with. Food, the shelter, and so on. Without having a food and a shelter, people will not think of a social need or a social security or living in a society more harmoniously, and forget about the spirituality. That is very difficult. And now, the Kama Sukhallikana Yoga, the people always been looking for the sensual pleasure. And with that sensual pleasure, we call it Bhoga Sampatti, striving hard to accumulate more and more for individual satisfaction. And they will do everything in their hands to achieve what they need or what they want. And with that, they will not consider any second human beings. They all will be thinking is greed-driven want, and will not consider what is right and what is wrong. And that is how class system started, division began, and identity created. And that was the reason why Babasaheb Ambedkar was opposed with the tradition that was established on the basis of this materialistic view. When we look at the Babasaheb's writings, philosophy of Hinduism,
probably around 200 something page. He clearly said that because of this division were created not for only one group, but that was the economical driven or laborers to the laborer. So it's a free labor getting, and as a result of that, the caste system was developed and imposed and become a tradition, and even that becomes so engraved that untouchables, so-called now, or Dalits, were punishing themselves, saying that, or thinking, or psychologically they were affected. With that psychological effect and religious imposement, they were thinking, or they were having this pressure, self-torturing, and with that they could not attain success in their life. They could not develop their needs to be fulfilled. Forget about the self-actualization, as Maslow says. The top level of success in the basic material need is the self-actualization, which is far beyond to attain for the scheduled castes. And this is why Ambedkar was hesitating on that, or working on that, to give freedom so that all the untouchables and Dalits, so-called, will have this basic needs will be fulfilled, so that after the Ambedkar's so hardworking, he managed to change some form of laws in the constitution, and yet, but through the religion and the custom, still needs to work a little bit more, which we need to think about it, that how much we have been working on that. If you remember in 1924, when the Baba Sahib Ambedkar formed the Sabha, he gave educate, agitate, and organize. In that moment, Baba Sahib Ambedkar also said, I will do my best from my side, you do your side. Now we have to ask, have we done? We have to ask ourselves, as Ambedkar writes, what are we doing? So here, Baba Sahib Ambedkar worked so hard, tirelessly, raising from the dirt to be a blossom lotus, where he let the Buddha sat on his lotus, to allow his people, scheduled caste or Dalits, to find the basic needs so that they can grow their own satisfaction and success in their life. Stopped there. He further encouraged all of us to organize it for the social security, so that we have the social harmony, so that we have this community that will grow in his teachings, so that we all can come out from this torture that we are torturing ourselves in the name of whether it is a religion, whether it is a tradition, whether it is a culture. Self-mortifying oneself with the psychological effect that is there. And here we have to think organization, how much we have been able to organize to work together as a one form. It is very sad to tell and sad to see from my own experience. And I've been telling this again and again, that with the blessings of Baba Sahib Ambedkar, we have able to educate ourselves. And we have been fighting for the freedom for ourselves and then our fellow friends. But we are very back with the
organization, is splitting one after another so much. And here we have to think the sayings of the Baba Sahib Ambedkar saying, if you can't take the will or the movement forward, keep it where it was. So we have to think whether we are doing it or not. So if we can organize properly, then the social need will be fulfilled. And the social need brings the security for our people, for not only our people, but for the humanity that the Baba Sahib was talking. Although he was channeling through the Dalits, but he was indicating the human harmony, human living peace by fulfilling, overcoming that. And this human security or the social security is needed that we are fighting us. And we can find plenty of writings of Baba Sahib Ambedkar on injustice. And this injustice is simply to fulfill fighting towards the social security or social justice to all of us. And now where the Buddhism fits in. Now Buddhism fits in here, the spiritual need that we all have to have. Yes, we need a basic need. Yes, we have to have a social needs so that we can live safely. But our mind is still unsettled. Our mind is still wondering. Our mind is still so fighting towards something else. And here needs a social security. So if you look at the Buddha's teachings, the Buddha says that we feel insecurity in our life in 3 ways. 1, economical insecurity. Number 2, social insecurity. And number 3, spiritual insecurity. Now, with the help of Baba Sahib Ambedkar, we have, in a way, in line with freeing ourselves from this economical security and the social security. And much of us, we are still fighting towards getting it. And Baba Sahib gave furthermore, that's the Buddhism, to find the spiritual security within ourselves. And Buddha also said, Akhataro Tathagata. He is just the pathfinder. We have to walk on it to find the solution. Same with the Baba Sahib Ambedkar. He gave 3 basic rules: educate, agitate, and organize. And on that path, we have to learn to walk to get the right balance. And this right balance Buddha is talking about is simply learn to practice morality. Live your life in moral way. 5 precepts. Now we have to ask, as a Buddhist, as we have followed Buddhism, we have followed Buddhism with the footsteps, on the footsteps of the Baba Sahib Ambedkar, we have to check ourselves whether am I a real Buddhist? Am I following Buddhism properly? Or even I also often say that as Ambedkar writes, we have to read out all the 20 vows again and again. And checking yourself, am I a real Ambedkar writes, and am I a real Buddhist? And when we look at that, we realize that the Buddha's teachings on the Eightfold Noble Path becomes the middle path that leads to the spiritual security for this life as well as a life after, if there is any. And with that, we can have a peace of mind. And that peace of mind comes from within, not from out there. It doesn't matter how wealthy we become after this gaining the prosperity, so-called the basic needs been fulfilled. It doesn't matter how nice place or a secure place we are in. If your mind is not in peace, then we cannot find peace anywhere.
our life is still unsettled. So that's why the spiritual needs to be fulfilled by practicing properly the Eightfold Noble Path, and in a short form, Sila, Samadhi, and Panya. A moment when we follow the Sila, Samadhi, and Panya properly, then we are following the right path. And this is the path that Buddha was talking about. Initially, Buddha rejected or saying that we should avoid two paths. That's the sensual pleasure and self-mortification, but follow the right balance, right path. And this is the middle path. Now, doesn't matter which era we are in, if we are following towards the accumulation of only basic needs or only thinking of a social securities, there will be always conflict and there will be always insecurity. But the moment when we think of this spiritual security and practicing towards it, with it, then definitely we can have a peace of mind and we will be in a successful state. So this, the whole entire teachings of the Buddha is to find this social, these three needs to be fulfilled: the basic need, social need, and a spiritual need. And in order to do that, remember, let us remember the 5 precepts at least, practicing with it, taking control of our own emotions and feelings and whatever actions that we are performing, being mindful of it, and let not the this emotions and the feelings driven away and causing a lot more troubles. And let's develop the panya, knowing things as they truly are, knowing and understanding our own self. Not only self as an existential self that we have been fighting or we are fighting for, but beyond that, this ego or this identity, to be free from it. And that's the first ladder to the noblehood, called Sotapanna. So I hope and I wish everyone best of luck, and may the Dhamma grow everywhere and everybody fulfills their needs, whether it is from the basic need or whether it is the social needs or further on a spiritual need. I wish you all the best and may you all be well and happy. So I end this short talk here, and with the blessings of the Buddha Dhamma Sangha, may you all be well and happy. And thank you. साधु साधु साधु। बहुत बहुत धन्यवाद बंते जी, आपने बहुत अच्छे धम्म प्रवचन दिए। प्यारे धम्म बंधु, बंते जी ने जो धम्म चक्क पवत्त सूत्र के बारे में बताया कि भगवान ने, तथागत ने हमें जो संदेश दिया, जो धम्म देशना दी है, हमें एक्सट्रीम से बचना चाहिए, अतियों से बचना चाहिए, मिडल पाथ फॉलो करना चाहिए। भोग संपत्ति, खाओ पियो आनंद करो, इस ऐसे थिंकिंग में नहीं जाना चाहिए। सेल्फ मोटिफिकेशन, जो अपने शरीर को बहुत यातनाएं देने, कष्ट देने वाली भी रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। ये बंते जी ने बताया जो तथागत का संदेश है। और बाबा साहब के बारे में उन्होंने बताया, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने वो बताया, बाबा साहब बोलते हैं, आई हैव डन एवरीथिंग फॉर माई पीपल, आई हैव डन एवरीथिंग फॉर माई पीपल, हैव यू डन समथिंग फॉर योर पीपल। वो हमें पूछते हैं, भाई आपने अपने समाज के लिए क्या कुछ किया। और यही हमारा फर्ज है, जो बाबा साहब ने अपनी सारी जिंदगी समाज के लिए लगा दी है, ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए लगा दी है। हमारा भी फर्ज बनता है हम भी उसको पे बैक करें। सो बंते जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हम विनती करेंगे, अगर किसी का क्वेश्चन होगा तो हम बाली जी से बाद में पूछेंगे, तो आप हमारे साथ स्टे करेंगे। तो
अभी मैं हमारे जो दूसरे गेस्ट स्पीकर हैं उनकी तरफ चलूँगा, मिस सरिता चंदेल जी। सरिता चंदेल from Wolverhampton, UK. She is BA Honors in Business Economics with grade first class. She has done MSc in Accounting and Finance with grade distinction. बचपन से, आज की बात नहीं, बचपन से ही सरिता जी बुद्ध विहार के साथ, बाबा साहब के मिशन के साथ, धम्म के साथ जुड़े हुए हैं। जब से इन्होंने होश संभाला 4-5 साल की एज से, हम देख रहे हैं बुद्ध विहार में, अपर जवाब स्ट्रीट में कैसे उनका योगदान रहा है। और राइट फ्रॉम हर चाइल्डहुड टिल टुडे यूके में किसी भी तरह कोई धार्मिक कार्यक्रम हो, कोई प्रोग्राम हो, कोई प्रोटेस्ट हो, कोई स्ट्रगल करना पड़े, कोई लंदन में कोई प्रोटेस्ट करना हो, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। कोई मैनेजमेंट का स्किल्स है, आईटी स्किल्स उनकी है। और खास करके कोविड के दिनों में, लॉकडाउन के दिनों में सरिता जी ने बहुत विहार में अपना योगदान किया। जो भी कोरोना की गाइडलाइंस थी गवर्नमेंट की, काउंसिल की, वो हमारे उपासकों को टाइम टू टाइम बताती रही। इन्होंने फोल्डर वहाँ रखा, एवरी वीक उसको अपडेट करती रही। और गवर्नमेंट की जो भी ऑनलाइन मीटिंग्स होती थी बुद्धिस्ट कम्युनिटी की तरफ से, कमेटी की तरफ से, सरिता वो ऑनलाइन अटेंड करती थी, हमारे व्यू पॉइंट देती थी। रिलीजियस प्लेसेस की जो भी इंस्ट्रक्शंस थी गवर्नमेंट की, वो सरिता जी हम उपासकों को सारा अवेयर करती थी। वो असिस्टेंट सेक्रेटरी भी उन्होंने एज ए सर्विस की है कमेटी की। और सबसे खास बात मैं बताना चाहूँगा भी उनकी फैमिली के बारे में। इंग्लैंड के बहुत ही जाने माने बुद्धिस्ट और अम्बेडकरी, स्टॉन्च अम्बेडकरी बुद्धिस्ट जो जिन्होंने बाबा साहब को देखा है, बाबा साहब के प्रवचन सुने हैं, बाबा साहब की धम्म देशना सुनी है, बाबा साहब के सामने बैठकर उनका आदेश सुना है। मैं बात कर रहा हूँ लेट अंकल संत राम जी की। सरिता चंदेल संत राम जी की ग्रैंड डॉटर है, उनकी बेटी की बेटी है, उनकी दोती है। तो ये फैमिली आज से नहीं, बाबा साहब के टाइम से कंटिन्यूसली तो धम्म की मिशन की सेवा कर रही है। तो हमें बड़ा अच्छा लगा, हम प्राउड फील करते हैं जो सरिता जी आज हमारे धम्मा वेब पेज पर पहली बार आए हैं। तो सरिता जी, हम आपका स्वागत करते हैं। तो आपका विनती करते हैं जो आपके जो आज का जो विचार है, जो भी आपके लेक्चर है, वो हमें हमारे दर्शकों को प्रेजेंट करें। सरिता चंदेल जी। Thank you to Mr. Manol Berdi and Mr. Anand Bolli for inviting me onto Dhamma Waves today. It gives me great pleasure to join you on the first anniversary of Dhamma Waves. You have created a great platform to open up discussions about Buddhism, Dr. Ambedkar's mission on social media, reaching worldwide audiences. So many congratulations to the Dhamma Waves team. Namo Buddha Jai Bhim to all the viewers. Firstly, I would like to begin by wishing you all a very happy and prosperous new year. May this year ahead bring you all good health, joy, and prosperity. Thank you for the introduction, Mr. Manor Berdi. I will just briefly go over my own introduction and talk a bit about Dr. Ambedkar and the mission. My name is Sarita Chandel. I'm from the UK, and I have graduated with BA Honours degree from the University of Greenwich in London. And more recently, I completed my Master of Science degree in Accounting and Finance from Aston University in Birmingham. Currently, I'm working for a global banking corporation within the commercial banking division. And as Mr. Berdi has mentioned, I'm also a member of Dr. Ambedkar Memorial Committee of Great Britain. And in 2019, I was elected as Assistant Secretary, whereby I worked alongside Mr. Manol Berdi, who was General Secretary, and Mr. Kushwinder Kumar, who was President. And over the years, I have become an advocate of Dr. B.R. Ambedkar's noble mission and philosophy from reading his books and his essays, and I will continue to work for the mission to keep the Karwa moving forward. Today, I will begin by providing an insight into the history of Dr. B.R. Ambedkar, what he achieved throughout his lifetime, what his noble mission was, and why it is important in present times. So to begin with, who was Dr. B.R. Ambedkar? Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar was born on the 14th of April, 1891. He was a 14th child in the family
which belonged to an untouchable caste of Mahars. The untouchables were denied their basic human rights to education, property, and even water. They had no social, economic, and political rights or powers. In his early life, Dr. Ambedkar suffered various caste-based prejudices in school and in society. At school, he was made to sit outside of the classroom on a piece of gunny mat. He had to go without water, not because there was no water, but because he was an untouchable who had no right to drink from a public source. And despite these arduous hardships, Dr. Ambedkar successfully went on to obtaining the following degrees: MA, MSc, PhD, LLD from Columbia, D.Lit from Osmania, DSc, and Bar at Law from Gray's Inn, London. Dr. Ambedkar was recognized as a man of learning, and he was a high official in the Brodda state in 1917. However, the prejudices continued. No drinking water was available in his office. His subordinates kept a distance from him, and low-paid workers often threw files and papers on his desk from a distance. And even when Dr. Ambedkar practiced as a barrister in a high court of Bombay, the solicitors would not condescend to have any business with him on the grounds of untouchability. And so, having endured such personal, painful experiences, Dr. Ambedkar stood up for the rights of the untouchable people, now referred to as the Dalits. Dr. B.R. Ambedkar became a social reformer, emancipator of the untouchables, greatest fighter for their freedom, justice, liberty, equality, and fraternity. He was a chief architect of the Indian Constitution and is commonly referred to as the father of the Indian Constitution. He went on to become the first Law and Justice Minister of independent India. Dr. Ambedkar found the solution for solving such social inequality through Buddhism. And on the 14th of October, 1956, Dr. Ambedkar embraced Buddhism, leading hundreds and thousands of people to also embrace Buddhism, making him the greatest revivalist of Buddhism in modern India after Emperor Ashoka. Dr. B.R. Ambedkar was also a prolific writer, and his best known works include Caste in India, Their Mechanisms, Genesis and Development, Annihilation of Castes, Who Were the Shudras, The Buddha and His Dhamma, Buddha or Karl Marx, Revolution and Counter-Revolution in Ancient India, The Problem of the Rupee, Its Origin and Its Solution, and this particular thesis led to the formation of the Reserve Bank of India. So, what was Dr. Ambedkar's mission? Dr. B.R. Ambedkar's mission was to educate, agitate, and organize in order to uplift the downtrodden people of India to have self-respect, human dignity, and equality of status. Dr. Ambedkar's noble mission was to promote education in order to defeat the tyrannous caste system, which we still see today in present-day India. Here I'd like to add that Dr. B.R. Ambedkar declared that political democracy would mean nothing without social democracy. And it is this social democracy we as a community must continue to fight for, so that the Dalit community in India is no longer stripped of their human rights, so girls are protected from injustices and are encouraged to become educated and have a successful career in whichever fields they choose. And so ultimately all Indians can live peacefully together as one. Next, I would like to share with you a few photographs of some mission work that we've done here in the UK. So I will now share the photos. Okay. And can everyone see my screen? Okay, so here is photographs of protests taking place in London. And here we were protesting against the barbaric caste-based atrocities that took place in India over the recent years. As you can see, the weather on the picture on the right was awful weather, but still hundreds and thousands of Buddhist Ambedkarites came together to protest against these injustices. And here in the next slide, we also have held numerous candle-lit vigils showing solidarity and support to the families who have sadly been victims of
heinous caste-based atrocities. And here we are lighting candles in front of the Dr. Ambedkar Memorial Committee, Bodh Vihar, and also remembering the people we have lost. Okay, so we all have a duty to propagate the mission of Dr. B.R. Ambedkar through the promotion of education, as education is what will give us freedom of thought, self-respect, and endless opportunities to better our own lives and the lives of those around us. I would like to send out a message to young, educated people to also come forward and join Dr. Ambedkar's mission to further raise awareness and promote the mission, helping it to regain the momentum, especially in current turbulent times where Indian democracy has been threatened. We've seen an increase in caste-based violences, denying citizens their basic fundamental rights, such as the right to protest, down to even corrupt electoral processes. So it is important for us to unite to save and protect the democratic laws laid out in the Indian Constitution, provided by our great leader, Dr. B.R. Ambedkar. This brings me to the end of my segment. And once again, thank you to Mr. Manol Berti for inviting me onto the show today. I look forward to the continued growth of Dhamma Waves. And once again, congratulations to you all on the first anniversary of Dhamma Waves. Namo Buddha, Jai Bhim. थैंक यू वेरी मच सरिता, बहुत अच्छा आपने बाबा साहब के जो लाइफ बायोडाटा दिया और जो आपने इस प्रोटेस्ट में संघर्ष में पार्टिसिपेट किया उसकी पिक्चर्स भी आपने दिखाई है, बहुत अच्छा लगा। और प्यारे उपासकाओं, सरिता जी ने जो मैसेज दिया यंगस्टर को स्पेशली कि बाबा साहब के मिशन में ज़्यादा से ज़्यादा उनको इन्वॉल्व होना चाहिए। हम जैसे जो सीनियर है हमें तो रिटायरमेंट पर है, आगे का जो फ्यूचर है, जो मिशन है बाबा साहब का, जो बुद्धा का धम्म है, वो इन्हीं बच्चों ने, इन्हीं लोगों ने आगे ले जाना है। तो उनकी अपील है सरिता की कि ज़्यादा से ज़्यादा मिशन में आए, बाबा साहब का प्रचार प्रसार, जो उनका मैसेज था, जो उनका स्लोगन था, उसको घर घर तक पहुंचाएं। यही हमारा पे बैक टू सोसाइटी है। तो एक बार फिर हम सरिता जी चंदेल जी से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने समय निकाला और आशा करते हैं कि वे फ्यूचर में भी वो ऐसे ही अपना समय निकालते रहेंगे और धम्मा वेव को सपोर्ट करते रहेंगे। जब भी हमें ज़रूरत पड़ी, हमें आईटी स्किल्स की भी बच्चों की ज़रूरत है, खास करके वुलहम्पटन में जो हमारी यूके की टीम है, तो उसके लिए आपकी बहुत सर्विसेज की हमें ज़रूरत है। हम आशा करते हैं कि आप हमारा ऐसे ही साथ देते रहेंगे। एक बार फिर आपका बहुत धन्यवाद और आपके मम डैड पुरुषोत्तम चंदेल जी का और रानी चंदेल जी का भी हम बहुत धन्यवाद करते हैं। वो अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दे रहे हैं। तो एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जैसे कि हम एवरी संडे जो प्रोग्राम करते हैं धम्मा वेव चैनल पर, लाइव बनते जी के प्रवचन होते हैं, कोई गेस्ट स्पीकर होते हैं, इसी तरह हम एवरी फुल मून डे को भी हमारा हर महीने प्रोग्राम होता है। जो इस वर्ष का जनवरी का पहला फुल मून डे वे कल है, मंडे को 17 जनवरी। तो उसी श्रृंखला में हम जो कल का प्रोग्राम है फुल मून डे का, वो तक्षशिला महाविहारा से लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। 8 बजे समय है, तो उसका पोस्टर भी हमने शेयर कर दिया है। तो कल का प्रोग्राम भी देखना मत भूलिएगा। जो इस साल का फुल मून डे है वो कल 8 बजे लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाएगा धम्मा वेव्स की इसी पेज पर। तो आगे जो हमारे मैंने शुरू में बताया था कि धम्मा वेव्स की फर्स्ट एनिवर्सरी हम 30 जनवरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं संडे वाले दिन। तो हमारे साथी फाउंडर मेंबर खुशविंदर कुमार जी, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो अपना एनिवर्सरी है 30 का जो डिटेल प्रोग्राम हैगा वो उसके बारे में बताएंगे। और खुशविंदर जी के बारे में परिचय देने की इतना कोई ज़रूरत मैं नहीं समझता। बहुत वेल नोन नेम है, नॉट ओनली यूके बट मिशन में। तो आई थिंक ही इज़ नॉट ऑनलाइन। Mr. Harvansh Birdi is here online. Ji, he is there. अच्छा, so Yes, I am मैं here. या हरवंश बिरदी से रिक्वेस्ट करूंगा, अब 2-3 मिनट में वो कुछ कहना चाहेंगे। सो बिरदी साहब प्लीज गो ऑन। हाँ, आपने फुल मून डे का तो कह दिया। मैंने पिछली बार भी कहा था कि जितनी भी बुद्धिस्ट फैमिलीज हैं उनको फुल मून डे के दिन पर
जो खीर हमारा बौद्ध भोजन है वो बनाना चाहिए। अगर तो पहुंच है बाहर भी बांटना चाहिए, अगर नहीं तो घर में जरूर बनाना चाहिए। तो मैं जो पिछले हफ्ते जो जन्मदिन थे कुछ लोगों के, कुछ के निर्वाण दिन, मैं उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। हमारी बेटी मीनू करने वाली थी, लेकिन उनका बेटा बहुत बीमार हो गया, वो नहीं आ पाई। तो 12 जनवरी को शिवाजी मरहट्टा, हम तो पंजाब में रहते हैं, उनका नाम हर एक ने सुना है। तो उनकी जो माता जी थी जीजूबाई, उनका 12 जनवरी 1518 को जन्मदिन हुआ था। तो 12 तारीख को उनका जन्मदिन था। बहुत बहुत खुशी की बात है कि ऐसे बहादुर बेटे को उन्होंने जन्म दिया। और लखनऊ में जिन्होंने बहुजन प्रकाशन चलाया था, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, एक्चुअली शुरू में मैंने उनकी ही किताबें पढ़ी, तो बाद में भीमपत्र का बाली जी की पढ़ी। तो 12 ही जनवरी को 1974 को उनका निर्वाण हुआ था। उन्होंने बाबा साहब के मिशन का लिटरेचर में बहुत काम किया। कांचीराम भी जब वहाँ बहुजन प्रकाशन में गए तो बहुजन समाज पार्टी का नाम उन्होंने वहीं से लिया था, ऐसा वो उन्होंने बताया। और महाथेरो बुद्धानंद जो लखनऊ में बुद्ध विहार, बाबा साहब वहाँ विजिट कर चुके हैं, तो वो ओरिजिनली श्रीलंका से थे। और जो जितने भिक्षु बाबा साहब के साथ 14 अक्टूबर 1956 को थे, वो जो फोटो बाबा साहब की है सभी भिक्षुओं के साथ, वो मैंने पहली बार उसी बुद्ध विहार में देखी थी। और बुद्धानंद जी जो है उनका वो 13 जनवरी 1874 को उनका जन्मदिन था। मंगू राम जी हमारे पंजाब के थे, उन्होंने फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने काम किया। और मराठावाड़ा यूनिवर्सिटी, जिसका नाम पहले मराठावाड़ा यूनिवर्सिटी था, लेकिन हमारे लोगों ने डिमांड की कि इसका नाम डॉक्टर अंबेडकर मराठावाड़ा यूनिवर्सिटी होना चाहिए। वो वैसे ही थाली में नहीं मिली, उसके लिए हमारे 2-4 नौजवानों को शहीदी देनी पड़ी थी। तो फिर 1994 को 14 जनवरी को उसका नाम डॉक्टर अंबेडकर मराठावाड़ा यूनिवर्सिटी कर दिया गया था। और आजकल जो वाम सेफ के बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं कुमारी मायावती जी, कल उनका जन्मदिन था। और इंडिया में तो बहुत धूमधाम से मनाया गया। 1956 को उनका जन्म हुआ था। और आखिर में कल के दिन ही मार्टिन लूथर किंग, जो अफ्रीकन लोगों के अमेरिका में नेता हुए हैं, स्पोक्समैन हुए हैं, और उन्होंने बहुत कुछ जो नीग्रोज है उनकी आज़ादी के लिए किया था। तो ये पिछले हफ्ते के इवेंट थे। तो इसी तरह हर हफ्ते हम जो पिछले हफ्ते में इवेंट्स होंगे उनका हम बताते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद बिरदी जी, आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है। अभी हम खुशविंदर जी की वेट कर रहे हैं। जब तक वो आते हैं, शायद कोई नेटवर्क का इशू हो गया। तो मैं बाली जी से, आनंद जी से बेनती करूंगा कि वो आज के इस प्रोग्राम पर सभी का धन्यवाद करेंगे। तो और भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर खुशविंदर जी नहीं आते तो आप जो एनिवर्सरी की है उसकी डिटेल हमारे व्यूअर्स के साथ जरूर शेयर करें। आनंद बाली जी। नमो बुद्धाय, जय भीम। वंस अगेन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आई विल कम बैक आफ्टर दैट। उससे पहले मैं कैन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, उनके पास डिटेल्स हैं जो हम एनिवर्सरी मनाने जा रहे हैं, तो उसके बाद फिर आई विल कम बैक टू यू। थैंक यू विरदी साहब। हाँ जी, नमो बुद्धाय, जय भीम सभी को, और फेसबुक देखने वाले को जो आज इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लाइव देख रहे हैं और उसके बाद भी देखेंगे, उनका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं धम्मा वेव्स की पूरी टीम।
तो जो हमारे पास वो डिटेल्स हैं एनिवर्सरी की, तो उसको हम लाइन अप कर रहे हैं। तो उसका सभी डिटेल जो खुशविंदर जी और बिरदी साहब ने बनाया है, मैं बहुत तहे दिल से इनका धन्यवादी हूँ कि काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं जी लोग धम्मा वेव्स को हाईलाइट करने में। और स्पेशल थैंक्स जो आज भंते जी और मिस चंदेल का। हमें बड़ी खुशी होती है कि जो हमारे यंगस्टर हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बाबा साहब का जो मिशन है उसको आगे ले जाने के लिए बहुत तत्पर हैं। तो हमें ये गर्व भी है इन बच्चों पर कि जो हमारे बाद इन्होंने जो मिशन संभालना है वो अभी से शुरू हुआ है। तो और भी काफ़ी लोग हैं जो जैसे हमारे रंजीत कुमार गौतम जी है, वो यंगस्टर हैं दिल्ली से। तो काफ़ी वो बाबा साहब के मिशन के और बुद्धिज्म के लिए काफ़ी वो काम कर रहे हैं दिल्ली में, और बच्चों को गाइडलाइन देते हैं, गाइडेंस देते हैं। और एवरी वीक जब भी उनके पास टाइम होता है तो वो काफ़ी धम्म प्रचार करते हैं। इसी तरह हमारे जो नए साथी जुड़े हैं, मीनू जी और उनके हस्बैंड, तो उनका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि वो धम्म के लिए और बाबा साहब के मिशन के लिए वो प्रचार प्रसार करते हैं। इसी तरह हमारे जो फोक सिंगर हैं सत्यम बौद्ध जी और जीवन महमी जी, वो भी बुद्धिज्म के लिए काफ़ी प्रचार प्रसार करते हैं। तो हमारा जो 30 जनवरी का जो प्रोग्राम है उसके लिए काफ़ी लाइन अप किया है, जिसमें हेमंत सुते जी, डॉक्टर इंदु चौधरी जी और भंते शरणपाला जी टोरंटो से, और काफ़ी जो वेरी इंटेलेक्चुअल स्पीकर्स हैं वो हमारे इस प्रोग्राम में आ रहे हैं। तो हम सभी से विनती करते हैं कि 30 जनवरी का जो प्रोग्राम है वो देखना ना भूलें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। सो इसी के साथ मैं धम्मा वेव की पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ जो बाबा साहेब और बुद्ध धम्म का जो प्रचार प्रसार करने में हमेशा तत्पर रहते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। जी बहुत बहुत धन्यवाद कैन साहब। और once again thank you Bandami Bante और thank you Sarita. Sarita, we have a question. Are you still on the line? Yes, we have a question came up. So first of all, thank you for your time. The question was that you are born and brought up in the UK, and you, as Mr. Birdiz ji mentioned, that you came from missionary family, so you got that all in your family. But what would your suggestion for the youngster, how they can involve themselves into the organization, a Buddhist Ambedkarite organization, and how they can be more connected with the committees? What would your suggestion? My advice would be firstly to read up on Buddhism and Dhamma, and also read Dr. Ambedkar's work, his essay and his books that he's written. I think from that itself, you will be inspired. And like myself, you will develop a passion to want to further promote the mission and also live a Buddhist life. So I think that's what I'd like to say to the young members. Firstly, to educate, as Dr. Ambedkar said, and then after that, you can join such societies and you can join protests, and that's when the agitation starts. And then after that, as Venerable Ponteji said, the problem is the organization. We as a community, we need to come together to organize, and that's how we can further move the Garva forward. So that's my opinion. Awesome, thank you. It's my question because sometimes we feel that पानी जी, मैं एक मिनट आपको इंटरप्ट करूंगा। बंते जी अभी जाना है उन्होंने, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा बंते जी, आप हमें ब्लेसिंग प्लीज गिव अस द ब्लेसिंग, तो देन आफ्टर देन दैट यू कैन लॉग आउट। थैंक यू बंते जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। So thank you very much for the invitation, Savi, and then hopefully we'll see you again. So unfortunately, I won't be able to stay throughout because
I've been awake since 1 a.m. and I continue moving, and now I'm moving to St. Andrews, so I have to move. So thank you, and now blessings to you all. Okay. Sapparo vachito sapaveramati kanto aniyaputo chatuvam pavasapitiyo avivachanto sapparo kuvan vinasatu mate bhavantu antarayo sukhi dikhayo ko bhavaha bhivandanasile sadechan vadhapachayino chataro dhamma Vadante ayuvano sukhang phalang. Sadhu, sadhu. Sadhu, Was near was. Sadhu. Thank you, Bhante ji. Thank you. Thank you, Bhante ji. So I'll continue with my question, Sarita. So the next question we have here. So a lot of time youngsters feel the communication gap between the elders who've been in long time in the committees, and they feel that communication gap. And as Manoj ji shared that you've been involved very actively in a memorial committee in Wolverhampton, and what was your experience, and what would you suggest to the new generation? How can they develop that kind of communication? How they can more connect with all these committee members? Right. So I think it's important to always, respect your elders, and from our elders we can learn a lot, and we need their guidance as well. We are young, we are new to the mission, so we will respectfully need their guidance. But also senior members, they should also remember that we have a voice and we have an opinion as well, and we all have a common goal, which is to further move the mission forward. So I think it's just an understanding of that, we must all work together to further promote the mission. Thank you very much. Very powerful point. You said that we have a common goal, and the youngster also has a voice, and very well said that. And thank you so much. Really appreciate your time. And I would request, please do give us a time in the future, and we would, love to have you in a part of the Dhamma Waves team. Right. Once again, thank you so very much. Namo Buddhaya. Jai Bhim. Back to Virdi Sahab. थैंक यू आनंद जी. मेरा ख्याल वो खुशविंदर जी बिजी हो गए हैं कि वो लेसन हो गया होगा उनका 3:30 पे, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट प्रोग्राम में उनको हम कांटेक्ट करेंगे. अभी हम यहीं पर क्लोज करते हैं. एक बार फिर सभी पार्टिसिपेंट्स का खास कर के सरिता जी का बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपना समय निकाला. हमें धम्मा वेव पर पहली बार सरिता जी आए हैं, तो आगे से भी अपना टाइम निकालते रहेंगे. बिरदी जी का, वसलन जी का, कैंथ जी का, आनंद जी का, सभी का बहुत बहुत, खुशविंदर जी का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. अंत में सभी से हम ब्लेसिंग करेंगे. भवतु सब मंगलं रखन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते. भवतु सब मंगलं रखन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते. भवतु सब मंगलं रखन्तु सब देवता सब संघानुभावे न सदा सोति भवन्तु ते. साधु 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 साधु. थैंक यू वेरी मच. तो हम सबका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं. जैसे आप जानते हैं कि जो धम्मा वेव का लोगो है, लोगो इज जानो फिर मानो. The purpose of Dhamma Wave is to learn and share the Dhamma. When you share the Dhamma, it is a gift for this life as well, many lives to come. With this, be mindful, be safe, be kind. Sadhu, sadhu sadhu, sadhu.
बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि